going to be very raw, nothing filtering, nothing else. So whatever I will be doing, any kind of conversation, if you are interested, so you can listen, otherwise you can scroll up. So what I was saying, ki this is the day that is going to be the end of the year 2025. Honestly, very honestly, I'm not excited. I'm, not in a guilt. Kyuki whatever I have planned, I achieved 70% only. Rest is, I'm not going to give some kind of excuses, but some, or I can say all of the things are not in your hands, but some of these things are in your hand. So you have to focus on them only. अब कितने भी तुम प्लान बना लो, कितने भी तुम चीज़ें कर लो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, कहीं से तुम्हारी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है, जैसे हम भटक जाते हैं, तो दैट इज़ गुड ऑनेस्टली. क्योंकि व्हाट आई वाज अबाउट टू कन्वे, इफ़ यू प्री प्लान द थिंग्स एंड जब वो प्लान वर्क नहीं करता है तो हम और ज़्यादा गिल्ट में चले जाते हैं. अगर वही चीज़, इफ़ समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू फाइंड, तो अगर वो खुद से मिल जाता है, या कोई कहते हैं ना डायरेक्शन मिल जाती है, देयर इज़ अ पावर, राइट, तो वो डायरेक्शन देती है. सो कहीं ना कहीं प्री प्लान इज़ नॉट बेटर देन random plan. So what I meant to say कि random plans are better than pre-plan, but of course planning is important क्योंकि these all things are in our hand, rest of is not, especially those lines. So in 2026, whatever the resolutions you have planned कि भैया अब तो इस साल करनी है, and I know कि ये वीडियो मेरे जैसे ही उम्र के जवानों के पास जाए, that would be better. अगर if somebody who is elder than me, so I want कि those people must give their experiences. जिस एज में हम हैं उस एज में what they have did and what are the problems they have faced, they can share their problems, their conclusions. I'm not saying कि share the solution because it may differ, तो वो person to person differ भी करेगा. So I'm just, I just want कि whatever the resolutions, whatever the plans you're going to plan, कि we will going to achieve it, we have to do it. Maybe किसी का ये लास्ट चांस हो सकता है इस साल, किसी का कुछ ना कुछ होगा, डेडलाइन होगा. सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, सो फॉर दैट पर्पस आई एम क्रिएटिंग कि दिस इज़ नॉट द एंडिंग. लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट कि किसी चीज़ को स्टार्ट किया है ख़त्म करने के लिए. नो, कुछ शुरुआत होती है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली. एंडिंग तो हो ही जाती है. सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे, and I just want कि whatever is coming in my mind related to 2026 आने वाला है उसके regarding, if somebody who is talking with them, so I'm just talking with myself only. Hope so I will be conveying to you guys कि whatever I'm thinking, whatever the thoughts are coming in my mind, I just spilled it out here so that nothing will be in my mind, and then after I will feel relaxed because nobody is there in front of me with whom I am talking. So there is just only that one eye or a camera, whatever it is. So I'm talking with that only. So let's have a very 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 happy year of your life, and a good wishes for you guys, those who are really striving for anything. You guys will achieve it. Have a positive mindset.
और ये जो नेगेटिव वाले थॉट्स आते हैं और ये जो अननेसेसरी के जो माइंड में बहुत सारे थॉट्स पड़े हुए हैं, उन्हें डिलीट करने का ट्राई करना इस साल में। आई नो आई एम नॉट अलोन कि मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैनी ऑफ द पीपल, अगर मैं पूछना चाहूँ तुमसे ही, तो you will be telling ki yes, relatable. So do let me know how I am able to get you people ki whether it is happening with me or not. बाकी I know, I understand कि इतनी तो मैच्योरिटी है भाई कि ये चीज़ें मेरे साथ ही नहीं होती है, क्योंकि जनता जनार्दन हैविंग अ कॉमन इंटरेस्ट, वो तो बहुत ही अनकॉमन और वी कैन से एक्सेप्शनल केसेस है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके माइंड में अनवांटेड थॉट्स रहते हैं ऑल द ईयर। दे वांट टू रिकवर फ्रॉम दैट और दोज थॉट्स, बट दे नेवर एवर गिव अ किक कि वो आगे बढ़े। सो इट इज़ बेटर टू डिलीट दैम। अब what are the solutions of it, मैं बोलूँगी तो you guys will do that. That is the very first is meditation. I know it will be very very difficult. From the first day you will be thinking कि it is a wastage of time, you will be feeling it, and then when you will start, क्योंकि मैंने start किया था और उसके पास छोड़ दिया था, तो I have a small experience about it, not a very wide कि what actually happens when you start doing that. When you start, so your mind will become very calm, you will have a very good amount of focus on your whatever you are doing us par. So that's the very kind of benefit we got if we did that. Second is having a focus on your whole body, because if it will be in your hand, it will be in a very lieu form कि हाँ ये सही है, तो everything is सही. So you have to focus on those two key areas. First meditation and second is exercise, and rest is just in power के हाथ पे, and then after you can do anything very calmly. So I can say कि I have calmed down myself, I have calmed down my mind due to those थोड़ी सी starting करने से, and I'm just thinking कि if I do on a daily or a routine basis पे, so maybe I will be able to provide you guys a very good amount of content as well. So let's see and let's hope कि सभी के लिए अच्छा साल जाए, otherwise nothing will going to be changed until your mind will start change. So change it, क्योंकि change खुद से होगा तो ही सामने किसी person में you will able to change it. कहते हैं लोग कि परिवर्तन करना चाहिए but start जो है वो खुद से करनी चाहिए, and after that you guys will be able to do anything. Yes.